Hello guys and welcome back to one more episode of Pune Motorcycle Club. I am Sheil Javeri and I am bringing to you a different kind of launch event today. हम लोग ने रिव्यूज़ के बाइक के रिव्यूज़ कर दिए, हम लोग ने राइड्स के रिव्यूज़ कर दिए, हम लोग राइड्स के व्लॉग्स कर दिए. अभी this is something different. This time it is something completely different. We are at Moto Central Baner, Moto Central India Baner actually. And हम लोग इधर आए हैं one of the launch events of the biggest helmet ब्रांड इन द वर्ल्ड. और वो हेलमेट ब्रांड में अभी तो नहीं पता होगा एंड वो बाद में पता चल जाएगा व्हेन वी रिवील द हेलमेट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गो इनटू द स्पेक शीट एंड एवरीथिंग. बट फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल अ हेड्स अप दैट दिस इज वन काइंड ऑफ अ लॉन्च इवेंट दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज हियर एट पुणे मोटरसाइकिल क्लब ऑफिशियल. थैंक यू. Moto Central, what we have been doing since years. So Moto Central was established in 2008 when we actually converted our parent company, that is Kapil Agencies. So Kapil Agencies is established in Pune since 1970. So we have been in the automobile industry for almost 50 years. So now we saw that there is a gap in the safety gear industry where a lot of people were selling the entry level or the amateur level of products which are not really what you require for the touring segment or the track day event. So when we started with events in the category of touring gear, like Rhinox was the first pioneer brand that we acquired as a distributor. So we have come a long way from that, right from AGV, Dainese, KYT, Exor, Wilmola, SMGO. So we have 145 brands in the house right now and all of them are readily available in store. There is nothing that you have to order to get the supply, it's all ready in stock. Now we have a website, motocentral.in. So if you want to buy anywhere in India, we ship all over India. For giving a precious Sunday to us, because firstly it's a India-Australia final match, and secondly it's a Sunday, so I think the riders will love to go for a ride and they have spared that for us, which means a lot to us. Anytime. For sparing a good Sunday for us. So thank you once again for the entire Pune Motorcycle Club for coming and joining us for the KYT event. Now let's proceed with the most awaited launch. And I would also like someone from PMC to join us for the... Yes, please come in. अरे यार कभी नहीं घातले चांगले 2 सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे इसकी वजह से. 1, 2, 3. हम लोग मोटो सेंट्रल के स्टोर में हैं, इनसाइड द स्टोर अभी, और अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन वगैरह किया. द अनवीलिंग इज़ ऑलरेडी डन. तो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द स्पेसिफिकेशन, द स्पेक्स एंड द फील ऑफ इट. तो मैं हेलमेट भी पहन के देखने वाला हूँ. सो लेट्स सी. हम लोग इधर सब पूरा ही हेलमेट का रखा है. देयर आर 4 not 4 वेरियंट्स बट 4 ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो देख रहे हैं. एक ही मॉडल है, डिफरेंट कलर्स है. तो ये सब कलर्स अभी सिर्फ 4 कलर्स अभी तक आए हैं और कलर्स आने वाले हैं. सो इसमें जो शेल है दैट इज़ polycarbonate shell and it is just 1550 kilos, so which is really lightweight. जो अगर तुमने पकड़ के भी देखा, it is really lightweight. जो heavy weight वाले जो helmets आते हैं, it gives a very
स्ट्रेन टू योर जो नेक रहता है वो, तो उससे अच्छा दिस इज़ रियली लाइट वेट एंड पॉलीकार्बोनेट बोला तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लाइट वेट. सेकेंडली इसमें आता है द बेस्ट थिंग इज पिन लॉक. पिन लॉक, सो हाई स्पीड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड देयर इज़ अ स्पॉइलर एज वेल, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो है. एंड अभी बात करें आगे के पार्ट में तो इट हैज़ अ लॉक. अभी वाई इज दिस लॉक? दिस लॉक इज़ जस्ट बिकॉज अगर तुम हाई स्पीड पे जा रहे हो एंड देयर इज अ लाइक obviously in on highways or while touring you are not going to ride at 40-50 unless and until वो सिटी में है. हाईवेज में जैसे ही तुम एंटर किए तुम 80-90 की स्पीड में भागोगे. जैसे 80-90 का स्पीड बढ़ा तुम्हारे फ्लैप्स ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं दूसरे हेलमेट में, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉक वो नहीं होगा. एंड इट इज़ विंड टनल टेस्टेड, तो विंड भी जाएगा नहीं. सो इसमें बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया है टू पुश दिस एंड यू हैव टू पुश इट अप, क्योंकि ग्लव्स रहता है तो ऑब्वियसली यू वोंट पुश इट डाउन, पुशिंग इट अप एंड दैट्स इट. इट इज़ सो गुड. तो विंड में मतलब हाईवेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सेकेंडली अभी दूसरा चीज़ बोलने चाहे तो दिस इज़ अ ड्यूल वाइज़र. इधर से देखोगे तो गॉगल्स का ये आ जाएगा बाहर. सो इट इज़ अ ड्यूल वाइज़र एज वेल. सो सनरेज यूवी प्रोटेक्टेड ड्यूल वाइज़र है, यूवी प्रोटेक्शन वाले है. बट व्हाट इज़ द मेन थिंग इज़ द ISI सर्टिफिकेशन. यस, it is ISI certified helmet. So Indian standard norms के हिसाब से it is certified, so you can use this helmet on the Indian roads. Plus the highest level of certification is ECE as well. तो इसको अभी मैं पहन के देखूँगा and I'll see the feel of it and I will let you know how it feels. So let's see the feel of the helmet. Wow. डाल दिया. Wow, ये I am incredibly, I have no words right now क्योंकि इतना मस्त हेलमेट है. इट इज़ वेरी लाइट वेट लाइक आई सेड, और जैसे ही मैंने डाला सर पे इट डिडंट इवन फील लाइक आई एम वेयरिंग हेलमेट. मस्त एकदम प्रॉपर ग्रिप के साथ एकदम मस्त आया है. प्लस लाइक आई सेड EC सर्टिफाइड है, 1550 किलोज का है. सो दिस इज़ the R2R from KYT, one of the best helmets in the world, and I am really hoping that I buy this in the next 6 months क्योंकि ये actually introductory price is 17,500 and you will find this exclusively at Moto Central India in Baner, and the other store that they have is in Nanapet. So both stores you'll find the KYT helmets. That is it. I am Sheel Javeri and I'm signing off. Bye bye.